Good afternoon, students. So, in my last lecture, I have taught you cellular adaptation definition. Okay. So, we will see now that what are the distinct forms of adaptation. Okay. So, what are the distinct forms of adaptation? It is hypertrophy, hyperplasia, atrophy, and metaplasia. Okay. So, first we will revise the definition of cellular adaptation, and then I will teach you one by one hypertrophy, hyperplasia, metaplasia, and atrophy. Okay, we will learn definition, mechanism, and example of each of it. Whoever want can take PDF from below. Okay. Now, first we will revise the definition of cellular adaptation. Okay. So, I have taught you that it is a reversible change in the cell size, number, phenotype, metabolic activity, or function in response to change in the environment. Okay. Now, first we will see hypertrophy. Okay. So, what is the definition of hypertrophy? So, it is that the cell increase in the size which result in increase in the size of organ. Okay. So hypertrophy is basically increase in the size of cell. Okay. Cell number will remain neutral. Only cell size will increase. Okay. Now it occurs mainly in the labile cell and stable cell. Now what are the three types of cell? So it is labile cell, stable cell, and permanent cell. So what is labile cell? Labile cell means dividing cell. The cells which are continuously dividing, which have potential for regeneration, they are known as labile cell. Okay. What are the example of labile cell? So it includes the epithelial cell, gut flora, our mucosal cells. Okay. So they are labile cells. They are continuously dividing. Now, what is stable cell? Stable cell matlab ki they have limited capacity of regeneration, and they are in quiescent stage. Okay. So we all know that there are phases of cell cycle like G0, G1, M, G2. Okay. So labile cells can be in any stage of cell cycle. Stable cell will be in the G0 phase. Why? Because they are quiescent cell. Whenever there is any injury to that type of cell, then only they can regenerate. Okay. They are not continuously dividing. So for example of stable cells are like liver cell, kidney cell. Okay. Whenever there is partial hepatectomy, देन व्हाट हैपन दैट जो भी लीवर बचा हुआ है उसमें से ज्यादा हिपेटोसाइट है वो प्रोलिफरेट हो गए. ओके. तो दे आर स्टेबल सेल. एंड परमानेंट सेल मतलब दे आर नॉन डिवाइडिंग सेल. नॉन डिवाइडिंग सेल मतलब कि अगर एक बार वो सेल डैमेज हो गया देयर विल बी परमानेंट इंजरी टू दैट सेल. ओके. सो परमानेंट सेल इंक्लूड न्यूरॉन्स. ठीक है. मतलब कि ब्रेन में अगर एक बार इंजरी हो गई फिर न्यूरॉन्स है वो रिजनरेट नहीं हो सकते. फिर दूसरा आएगा मायोकार्डियल सेल. मायोकार्डियल सेल मतलब कि जो हार्ट के स्मूथ मसल्स है वो जो सेल्स है वो रीजनरेट नहीं हो पाएंगे. ठीक है. तो हाइपरट्रोफी है, ये याद रखना है कि हाइपरट्रोफी है तो लेबल सेल, स्टेबल सेल और परमानेंट सेल तीनों में होगी. ठीक है. क्यों? क्योंकि वो तीनों सेल है वो अपनी साइज बढ़ा सकते हैं. ठीक है. पर हमने देखा कि जो परमानेंट सेल है वो नॉन डिवाइडिंग सेल है. तो हाइपरप्लाजिया है दैट विल बी इंक्रीज इन द नंबर. तो हाइपरप्लाजिया विल नॉट अकर इन द परमानेंट सेल. ओके. But hypertrophy can occur in all three cells: labile cell, stable cell, and permanent cell. Okay. Now, after that, what is mechanism of hypertrophy? The mechanism of hypertrophy is increased cellular protein production. Okay. Now we have to remember two type of hypertrophy. Okay. matlab it is not type, but one is physiological hypertrophy and other is pathological hypertrophy. Okay. Now what is the mechanism of physiological hypertrophy? So whenever there is increased workload in particular organ, then mechanical sensors in that organ will activate. Okay. And what they will do, they will increase the cell size. That is physiological hypertrophy. And pathological hypertrophy, which occurs due to growth factors and agonist, due to any hypertrophy occur due to underlying pathology. Okay. So this is mechanism of hypertrophy. Now what are the examples of hypertrophy? Now we have to remember
physiological hypertrophy, examples of both physiological hypertrophy and pathological hypertrophy. So we all know physiological example of physiological hypertrophy, it is uterus during pregnancy. Okay, now remember that uterus in the pregnancy is example of hypertrophy as well as hyperplasia. Why? Because there is increase in the cell number and increase in the cell size both. Okay, so it is example of both hypertrophy and hyperplasia. Then second is muscle hypertrophy in the bodybuilder. ठीक है, तो बेसिकली जिम में क्या होता है कि मसल्स पे वर्कलोड बढ़ता है, ठीक है, ड्यू टू वेट लिफ्टिंग और एनीथिंग देयर इज इंक्रीज लोड इन द मसल, so that's why muscle hypertrophy in the bodybuilder. Now one I have written but I have crossed it, that is breast at the time of puberty and lactation. So it is mainly example of hyperplasia, but there is glandular hypertrophy in at the time of puberty in the breast. Okay, so you can write it in the hypertrophy too. Now pathological hypertrophy. So pathological hypertrophy, now what is main mechanism? Increase workload. Okay, now whenever there is increased workload in the heart due to hypertension or any valvular disease, then what happens? There is suppose increased load in the left ventricle. The left ventricular muscle will increase in size to compensate that load. Okay, so there is left ventricular hypertrophy. It is example of pathological hypertrophy. Now other is atherosclerosis. Now what happens? Suppose this is the blood vessel. Okay, now atheroma plaque is over here. Now blood want to flow from here to here, but what happened? That atheroma plaque is in between. So blood vessel have to contract more. So blood vessel, the smooth muscle of blood vessel have to work more. That's why there is hypertrophy of that smooth muscle. Okay. Now third is compensatory hypertrophy of other kidney. When matlab we all know when there is one kidney is damaged or one kidney is removed, nephrectomy is done, then what happened? That अनदर वन किडनी है लोड, मतलब जो भी काम दो किडनी करने वाली थी वो अभी एक ही किडनी कर रही है, तो क्या होगा कि वो किडनी पे लोड बढ़ेगा, तो वो किडनी की हाइपरट्रॉफी होगी. ओके, सो दैट इज कंपेंसेटरी हाइपरट्रॉफी. ओके, सो अप टिल नाउ this is cell, labile cell, stable cell, permanent cell, we already know. Okay, now up till now what we have what you learn up till now, what you learn? Hypertrophy, its definition, mechanism, example. Okay, so we will quickly revise. What is the definition? हाइपरट्रॉफी मतलब इंक्रीज इन द सेल साइज ड्यू टू विच ऑर्गन का साइज है वो भी बढ़ेगा. ठीक है. व्हाट इज मैकेनिज्म? मैकेनिज्म इज मेनली इंक्रीज वर्कलोड. ओके, एंड मैकेनिज्म इज separate for physiologic hypertrophy and pathological hypertrophy. For physiological hypertrophy, what happen? Whenever there is increased workload, mechanical sensors will be activated. Okay, and they will do increase in the cell size. And what is mechanism of pathological hypertrophy? Growth factor release and agonist are release, which will do hypertrophy. Okay, now what are the examples? The physiological hypertrophy, pathological hypertrophy. Physiological hypertrophy, uterus, and second is breast. Okay, breast you can write in hypertrophy and hyperplasia both. And third hypertrophy, and third is muscle hypertrophy in the bodybuilders. Okay, and what is the example of pathological hypertrophy? First is left ventricular hypertrophy. Second is atherosclerosis, due to which there is smooth muscle cell hypertrophy in the blood vessel. Okay, and third is compensatory hypertrophy, whenever there is damage to one organ, like if there is damage to one kidney, then there is compensatory hypertrophy of another kidney. Okay, now hyperplasia. So first of all, what is definition of hyperplasia? So there is increase in the number of cell. Hypertrophy matlab increase in the size of cell. Hyperplasia matlab increase in the number of cell. Okay, now what happen in hypertrophy? That there is increased workload of the cell. Okay, now what happen in the hyperplasia? Increase functional capacity of the cell, मतलब कि cells है वो ज्यादा divide होगा. ठीक है, number of cell increase होगा. Now what is the mechanism?
So growth factor will act here too. Okay, so there is growth factor driven proliferation, and second is increase output of new cells from the tissue stem cell. मतलब अगर हिपेटेक्टोमी हुई है तो हिपेटोसाइट ग्रोथ फैक्टर स्टिम्युलेशन होगा और न्यू हिपेटोसाइट फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और या तो अगर इंजरी हुई है लीवर को, मतलब हिपेटाइटिस हुआ है या ऐसा कुछ भी हिपेटोसाइट को इंजरी हुई है, तो क्या होगा कि हिपेटोसाइट रीजनरेटेड बाय इंट्राहिपेटिक स्टेम सेल्स। ओके, नाउ व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ hyperplasia? तो physiological hyperplasia include female breast at puberty and pregnancy, as I have told you, and second is uterus during pregnancy. Okay, so uterus during pregnancy is example of both hypertrophy and hyperplasia. Okay, now pathological hyperplasia. So it mainly occurs due to excessive or inappropriate action of hormone. Okay, so what are the examples of pathological hyperplasia? It is endometrial hyperplasia due to estrogen excess. So we all know that there is estrogen and progesterone balance in our body. Okay, so whenever there is imbalance between estrogen and progesterone, and estrogen excess will occur, then what happens, that endometrial thickness will increase. So it is endometrial hyperplasia. Okay, and second is benign prostatic hyperplasia. We all know it occurs due to stimulation by androgen, BPH. Okay, now third is papilloma virus. So what will they do? They do skin warts. If there is viral infection by papilloma virus, then there is hyperplasia of the squamous epithelium. Okay, now atrophy. Now before atrophy we will quickly revise hyperplasia. Okay, so hyperplasia मतलब डेफिनेशन में क्या आएगा कि सेल्स के नंबर बढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर दूसरा कि उसकी फंक्शनल कैपेसिटी बढ़ रही है, ठीक है। मैकेनिज्म में क्या आएगा कि एक तो ग्रोथ फैक्टर स्टिम्युलेशन से होता है, और दूसरा क्या कि उसमें टिश्यू स्टेम सेल की वजह से प्रोलिफरेशन होता है। ओके, और एग्जांपल क्या आएगा, फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल में क्या आएगा, फिजियोलॉजिकल में आएगा ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्यूबर्टी एंड प्रेगनेंसी, एंड दूसरा यूटरस। ओके, दोनों में आएगा, यूटरस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओके, एंड नाउ एट्रोफी. So in atrophy there is reduction in the size of organ due to decrease in the cell size and number both. Okay, so remember, in atrophy decrease in the cell size as well as cell number. Okay, now what is the mechanism of atrophy? So it is due to decreased protein synthesis and increased protein degradation. Okay, now why there is protein synthesis decrease? So it is due to reduced signal by GF. बराबर, अभी ऊपर के दोनों में क्या हुआ था कि ग्रोथ फैक्टर स्टिम्युलेट कर रहा था, उसकी वजह से सेल की साइज भी बढ़ रही थी और सेल्स के नंबर भी बढ़ रहे थे। ओके, अभी एट्रोफी में क्या होगा कि जो ग्रोथ फैक्टर है उससे सिग्नल्स कम आएंगे, तो क्या होगा कि डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, और प्रोटीन डिग्रेडेशन कैसे इंक्रीज होगा, क्योंकि यूबिक्विटिन प्रोटीएस पाथवे एक्टिवेट होगा। हमने बायोकेम में देखा था फर्स्ट ईयर में कि ये जो पाथवे है वो प्रोटीन का डिग्रेडेशन करेगा। ओके, now what are the examples of atrophy? तो physiological atrophy, brain atrophy को हम उसमें लेंगे। So example of physiological atrophy is atrophy of uterus after parturition. Okay, तो जब भी बेबी डिलीवर हो जाएगा तो यूट्रस है वो वापस नॉर्मल साइज में आ जाएगा, that will be atrophy of the uterus. And second is thyroglossal duct disappear during the fetal development. Okay, now this is the diagram. Okay, so first is normal uterus, second is pregnant uterus. It occurs due to hypertrophy as well as hyperplasia, and after parturition uterus will come back to normal size, which is the example of atrophy. Okay, now pathological atrophy. So there are multiple example of pathological atrophy. Okay, so first is disuse atrophy. तो डिसयूज एट्रोफी मतलब हम सबको पता है कि अगर हमें इस हाथ में फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, तो फ्रैक्चर हो गया तो अभी कास्ट लगवाई, फ्रैक्चर को इमोबिलाइज करने के लिए कास्ट लगवाई है, तो क्या होगा कि जब तक कास्ट है तब तक ये जो हमारा हैंड है वो हम यूज नहीं करेंगे। तो आप नोटिस करना कि जो हमारा वर्किंग हैंड है उससे ये हैंड है वो थिन हो जाएगा। ओके, सो डिसयूज ऑफ दिस आर्म, देयर इज स्केलेटल मसल एट्रोफी। ओके, now second is denervation atrophy. Denervation atrophy means whenever there is nerve injury, तो
the muscle which is supplied by that nerve will be shrunken. Okay, so that is denervation atrophy. Now third is reduced blood supply. So whenever there is chronic ischemia of the tissue, then there is tissue atrophy. So what is the best example? It, so I have written senile atrophy and physiological atrophy, but there is wrong. So correct that. Okay. So due to atherosclerosis in aged patient, what happens that blood supplies which supply the brain will be occluded due to atherosclerosis. So what happens? Blood supply to brain will be reduced. So there is brain atrophy. Okay. So that is pathological atrophy. Now, so next example is inadequate nutrition. Okay, so like we all know in marasmus, okay, what happened in marasmus due to inadequate nutrition, there is skeletal muscle atrophy. Okay, now next example is loss of endocrine stimulation. Now due to loss of endocrine stimulation, there is atrophy of endometrium, vaginal epithelium and breast. You know that you all know that after menopause there is atrophy of endometrium, vaginal epithelium and breast. Why? Because there is a loss of endocrine stimulation. Okay, there is loss of estrogenic stimulation. That's why there is atrophy of endometrium, vaginal epithelium and breast. Okay, then next example is prostate atrophy after surgical castration. Okay, now pressure atrophy. Now when there is a tissue compression for a longer period of time, then there is atrophy of the uninvolved surrounding tissue. Okay, now suppose this is brain and this is tumor. So if this tumor enlarges and causes pressure on the brain, then what happen? The tissue of brain which is present surrounding the tumor is atrophied. Why? Because due to compression there is loss of blood supply. मतलब जो भी blood supply जा रहा है brain को, ट्यूमर उस वेसल को सप्रेस करेगा. तो क्या होगा कि वो जो ब्लड वेसल है वो जो ब्रेन के पार्ट को सप्लाई कर रही है वो पार्ट की एट्रोफी हो जाएगी. ओके, सो इट इज प्रेशर एट्रोफी. सो up till now in atrophy what we saw? First, definition. Okay, so atrophy is a decrease in both number and size. Then what is the mechanism? Due to decreased protein synthesis and increased protein degradation. Okay, and what are the example? So in physiological atrophy, brain atrophy, it is not in physiological atrophy, it is in pathological atrophy. Okay, then thyroglossal duct disappear during fetal development. Then atrophy of uterus after parturition. Okay, now pathological atrophy. So it includes disuse atrophy, denervation atrophy, reduced blood supply, inadequate nutrition, loss of endocrine stimulation and pressure atrophy. Okay, so up till now whatever we have discussed, that is cellular adaptation. Okay, now this is the flow chart. मतलब कि normal cell, so normal cell is in homeostasis. Okay, now whenever there is external stimuli, we know what is definition of cellular adaptation कि सेल का साइज, नंबर, मेटाबॉलिक एक्टिविटी कुछ भी बढ़ेगा. क्यों? क्योंकि उसका आजू बाजू का एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है. ठीक है, तो अभी सेल है वो नॉर्मली होमियोस्टेसिस में होता है. ठीक है, अभी बाहर से कोई भी ऐसा स्ट्रेस या तो कोई भी स्टिम्युलाई आएगा तो सेल उस स्टिम्युलाई में एडप्ट करने का ट्राई करेगा. ठीक है, तो पहले सेल्यूलर एडेप्टेशन होगा. नाउ इफ स्टिल स्टिम्युलाई परसिस्ट देन व्हाट हैपन कि सेल्यूलर इंजरी हो जाएगी. ठीक है, अभी सेल्यूलर एडेप्टेशन है वो क्या है, उसकी डेफिनेशन में ही है कि वो रिवर्सिबल है. ठीक है, अभी सेल्यूलर एडेप्टेशन हो गया, उसके बाद अगर स्टिम्युलाई प्रेजेंट रहा तो सेल्यूलर इंजरी हो जाएगी. अभी सेल्यूलर इंजरी है वो इनिशियली क्या होगा कि रिवर्सिबल होगी. ठीक है, पर इफ स्टिम्युलाई स्टिल परसिस्टेंट देन व्हाट हैपन, irreversible cell injury occur and cell death occur. Okay, so once it is irreversible cell injury, then cell cannot go back to normal condition. Okay, but if cellular adaptation or reversible injury occur, then cell can go back to normal condition. Okay, so this is the summary.
Now last is metaplasia. So what is metaplasia? Metaplasia is a reversible change in which one differentiated cell type is replaced by the another cell type. Okay, so what is the mechanism? It is due to reprogramming of the local tissue stem cell. अभी तक क्या था कि या तो सेल साइज में बढ़ रहा था या घट रहा था, या तो नंबर में बढ़ रहा था या घट रहा था, ठीक है। अभी इसमें क्या होगा कि जो एक सेल है, ठीक है, सपोज इफ स्क्वेमस सेल, तो स्क्वेमस सेल है वो कोलुमनर में चेंज हो जाएगा, कोलुमनर है वो स्क्वेमस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज मेटाप्लाजिया। नाउ व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ मेटाप्लाजिया? फर्स्ट इज बेरेट्स इसोफेगस। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो इसोफेगस है उसकी लाइनिंग नॉर्मली कौन सी होगी? स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। और जो गैस्ट्रिक मतलब जो भी स्टमक है, तो स्टमक की लाइनिंग होगी कोलुमनर। अभी क्या है कि स्टमक में एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अभी जो भी कोलुमनर एपिथेलियम है उसको आदत है गैस्ट्रिक एसिड की, तो पर क्या होगा, जब भी गैस्ट्रिक एसिड रिफ्लक्स होगा, ठीक है, वो GERD होता है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज, तो उसमें क्या होता है कि जो भी स्टमक का एसिड है वो इसोफेगस में रिफ्लक्स करेगा। तो उसकी वजह से क्या है कि जो स्क्वेमस एपिथेलियम है वो तो उसको तो आदत नहीं है एसिड की, क्योंकि इसोफेगस में तो नॉर्मली एसिड होता नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा कि जो स्क्वेमस एपिथेलियम है लोअर पार्ट ऑफ द इसोफेगस में, वो कोलुमनर एपिथेलियम में चेंज हो जाएगी। ओके, सो दैट इज कोलुमनर मेटाप्लाजिया। मेटाप्लाजिया को हम किस एपिथेलियम का नाम देंगे? जिस एपिथेलियम में वो कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसोफेगस में नॉर्मली कौन से एपिथेलियम है? स्क्वेमस। वो चेंज किस में हो रही है? कोलुमनर में। तो बेरेट्स इसोफेगस क्या होगा? कोलुमनर मेटाप्लाजिया। ओके, एंड इफ यू कांट रिमेंबर देन जस्ट रिमेंबर, मतलब इट कैन आस्क इन द, इट कैन बी आस्क इन MCQs too. So Barrett's esophagus is columnar. After B, that is C in ABCD. Okay, so remember like that. Now second is cigarette smoking. Cigarette smoking is squamous metaplasia. Okay. Normal epithelium of the trachea and bronchi is pseudostratified ciliated columnar epithelium. Okay. Now what happen if जब भी cigarette smoking होता है तो there is constant irritation in the trachea and bronchi. तो क्या होगा कि जो भी कोलुमनर एपिथेलियम है वो स्क्वेमस एपिथेलियम में चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्क्वेमस मेटाप्लाजिया। अगर अभी ये जो कोलुमनर है वो स्क्वेमस में चेंज हो गई, तो नॉर्मली क्या था कि वो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कोलुमनर थी। तो सीलिया था वो क्या कर रहा था कि प्रोटेक्ट कर रहा था, ठीक है, ट्रेकिया को, और दूसरा कि म्यूकस सिक्रीशन भी कर रहा था। अभी ये पूरी कोलुमनर है वो स्क्वेमस में चेंज हो गई है, तो उसका ये फंक्शन है वो लॉस हो जाएगा, ठीक है। सो इफ इट रिमेन परसिस्टेंट इट कैन लीड टू मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन। रिमेंबर कि मेटाप्लाजिया है वो कभी भी फिजियोलॉजिकल नहीं होगा, ठीक है। अभी तक हमने जो हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लाजिया ये सब है उसमें हमने फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल दोनों देखा, पर मेटाप्लाजिया है ना वो पैथोलॉजिकल ही होगा, एंड इट कैन लीड टू मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, now second is myositis, third is myositis ossificans, that is connective tissue metaplasia, and it occurs due to intramuscular hemorrhage. Okay, so this is all about cellular adaptation, and I have attached the PDF in the video description. Okay, my next video will be on cell injury. Okay, रोबिन्स की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी टफ है, तो मैंने ट्राई किया है कि जितना हो सके सिंप्लीफाई करके आपको समझाऊँ, ठीक है। तो डू वॉच माई वीडियो, like, share and subscribe. Bye bye.